So here we have a patient with us who is actually scared, very scared for surgery, and she's cried. She's been crying since yesterday evening because she's nervous, but we've consoled her and now she looks better. She's come to us with complaints of a flat nose. Also, there is completely lack of any tip support. She doesn't have a tip at all. There is flaring because there is lack of tip support mainly. So we are going to do a lot of dorsal work, tip work, also alar base. These are the three things we are going to focus on. It's going to be an open structure, septorhinoplasty with rib grafting, and this procedure should take us around 3 hours. We will show you the post-op results once it's done. This rhinoplasty. So you can see how the nose is literally buried into the lips. Projection is hardly there. There's some amount of nasomaxillary hypoplasia, more towards the latter part of the nose, not where it starts, but towards the tip. So we're going to be doing a reconstructive open structure nose job. Again, it's more cosmetic. She doesn't have any breathing issue. We're going to be working on the pyriform rim and the base of the nose as well, and rib harvest too. Cloth. So you can see the huge improvement here. So in this nasal reconstruction, you can see the tip is totally collapsed. The nose, as I say, was inside the lips. So done work on the base of the lip, base of the nose, and then the rhinoplasty. So you can see the improvement. Rib was harvested, dorsal graft, tip graft, strut grafts, osteotomies, marginal rim graft, patent grafts, and so on. And this has taken us a little over 3 hours. We've had to harvest rib as we had planned. Osteotomy was done, and you can see the improvement. We're going to now show you how the patient looked before we start. Alright, so this is post-op day 2 following a rhinoplasty. आपको अभी कैसे लग रहा है? दर्द, रिब पेन है? थोड़ा सा कल से बेटर है? हाँ। जिस दिन सर्जरी हुआ था उस दिन बहुत था क्या? हाँ, उस दिन थोड़ा सा था। हाँ। बाकी आज कुछ ठीक है। हाँ। और नाक के ऊपर पेन है क्या? नो पेन। घुटन सा घुटन सा हो रहा है क्योंकि अंदर वो जो पैक है उसकी वजह से। रीढ़ के पास थोड़ा थोड़ा पेन, उसके बाद कुछ। ओके। और आप खाना खा पा रहे हो? तो गले में वो मतलब छाला पड़ गया है। तो कुछ खा नहीं पाते, जैसे फ्रूट्स खा रहे हो? हाँ, जूस। Alright, so her concerns, her complaints are two. One is she's having some throat irritation, and second is minimal rib pain.
She says the rib pain has reduced as compared to the past 2 days, but it's still there. She's not able to eat. This is a very common complaint actually post intubation. Because of the intubation, the endotracheal tube, it does cause some amount of throat irritation. It should automatically subside on its own by tomorrow. So we'll follow up and see how is her throat pain tomorrow. And we've checked her throat area. It looks clear. There's nothing to worry about. It's something that should subside by tomorrow. We'll follow up and we'll let you know. Other than that, she's doing well. She's actually having some amount of periorbital edema here, no ecchymosis of what I see. Her sutures are intact, the LR base which will be removed on day 5. देखो आपका सर्जरी 10 तारीख को हुआ था ना, तो हम 15 तारीख को सुबह ये जो पैक है अंदर वो निकाल देंगे. बाकी आपका ये जो स्प्लिंट लगा है वो कुछ दिनों बाद ही निकलेगा आपका. ओके, कितने दिन बाद निकलेगा? कम से कम 3 से 4 दिन बाद. ओके, थैंक यू. दर्द हो रहा है क्या? जब ऐसे करता हूँ दर्द ठीक है. आपको अप्लाई If you remove, right? That's fine. Remove. We'll put baptized for 2 days. Tomorrow, what time is she going? Very good. Today morning, today evening, tomorrow morning, tomorrow for 4 doses. Day 9. It's time to take another splint off. Okay, Baba. आप मिरर पकड़ो ना. एक मिनट. कैसा लग रहा है? बोलिए. So you can see the improvement. That nose was really flat. We've augmented the dorsum, rib graft used. There's a little bit of a reddishness there which is going to disappear in the next few days. And you can see the overall shape of the nose. Side view. Dekho, you can see that. It was really flat. The lip was actually burying the nose. And now you can see the nose is standing tall. ये side. और थोड़ा. So अभी आप देख सकते हैं इस पे भी इम्प्रूवमेंट कितना है. और ये ऊपर वाला व्यू इसमें देखो पूरा चेंज हो गया. बहुत बढ़िया है ना. इसको अब ध्यान से केयर करना है. ठीक है. टाइम लगेगा हीलिंग के लिए. जी इतना बड़ा सर्जरी हुआ है, सब जगह हड्डी है अंदर, तो हड्डी जब तक सूख नहीं जाए तब तक आपको ध्यान से रहना पड़ेगा. ठीक है ना. और आप आज जा रहे हो, 2 दिन के बाद अगर आप जा सकते हो वो भी ठीक है. आप पोस्टपोन कर सकते हो टिकट, वो भी चलेगा. तो फिर पोस्टपोन, लेट देम गेट इट पोस्टपोन कपल ऑफ डेज. ठीक है. आप सोमवार या मंगलवार को जाओ, हम आपको 2 और 1 और दिन इंजेक्शन देंगे. बेटर है. आप दूर जा रही है ना, यहाँ रह के हमारे पास रह के सब कुछ निकाल के उसके बाद जाओ. जल्दीबाजी नहीं. ये ज़िंदगी में एक बार ही होना है ये सब, आगे नहीं होना है कुछ भी.
और आपका बहुत ही डिफिकल्ट था, 4 घंटा लगा सर्जरी। और यहाँ पे दर्द हो रहा है रिब का? बिल्कुल नहीं। वाओ, बहुत अच्छा। तो दोनों टाइम वर्क करके इंजेक्शन लेने आती हूँ और वर्क दोनों टाइम कुछ नहीं होता। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ ऐसे सुन के। और देखो वो थोड़ा चपटा हो गया है, नहीं पतला हुआ है, अच्छा लगेगा ना, पतला तो सब लोग चाहते हैं। और ये जो है ना, ये मतलब शेप अच्छी तरह से रहेगा पूरा। यहाँ पे सूजन है और ये जो रेडिश है वो भी चले जाएगा। ठीक है, आप हमारे सब्सक्राइबर्स को क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू। और कंफर्टेबल था ना आपका यहाँ पे रहना वहना? कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं कुछ हुआ? प्रॉब्लम नहीं हुआ। और आपको देखने पे अभी बहुत खुश भी है रिजल्ट। मैं भी बहुत खुश हूँ। हर पेशेंट को इतना अच्छा नहीं आ जाता नाक का, बिकॉज ये काफ़ी डिफिकल्ट राइनोप्लास्टी है। इसको हम रिकंस्ट्रक्टिव नोज जॉब बोलते हैं। मैं तो पूरा चेंज हो गई हूँ। So what you're seeing here is a reconstructive rhinoplasty, even though it is a cosmetic nose job. And this is simply because I'm going to show you a picture. You'll be able to appreciate that. You see the nose is literally, I call it buried in the lip. There's what is called as nasomaxillary hypoplasia, means the middle third, especially between the medial canthus, or in fact little bit outside, is all really protruded, hypoplastic. So I've done work on the base of the nose, on the pyriform rim, on the base of the lip, on the anterior nasal spine, and a rhinoplasty with a septal reconstruction. So that's how we've taken her from a position of like this to something like this. She's a very brave girl. So she stayed with us alone. आप अकेले कितने दिन रहे हैं हमारे साथ? 5 दिन 4 दिन? यहाँ 6 दिन। नहीं, लेकिन आपके साथ एक आए थे ना, वो आपको छोड़ के चले गए थे, मामा। तो वो तो 2 दिन के बाद चले गए। तो अकेले आप 5 दिन रहे? हाँ, 6 दिन। 6 दिन। So she was here with us alone 6 days, and a very determined girl, huh? And you can see the improvement. This is because there is some erythematous condition there. There's still healing to be complete exactly on the tip. So we've been applying some more ointment. It'll take 2 or 3 more days, and that will just resolve within a few days. चलो फिर तो ऐसा करो, आप फिर 2 और दिन रहिए हमारे साथ। आज सैटरडे हो गया है, तो आप ट्यूसडे को निकलो। 1-2 दिन एंटीबायोटिक्स मिलेगा, पूरा अपने आप सही हो जाएगा। कल से आज बहुत बेहतर है। दवा चेंज किया, स्टार्ट किया, वो भाग जाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। सो यू कैन स्टे, आ जाओ। ये हल्की हल्की दोनों साइड गड्ढी टाइप की आ गई, वो सब ठीक हो जाएगा। अभी सर्जरी हुआ, ये भी ठीक होगा। इसलिए हम 2 दिन आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं। जो लाल कलर है ना, ये निकलेगा। हमारे डॉक्टर्स रहेंगे, आपको चेकअप करेंगे, दवा देंगे। पेमेंट कुछ नहीं लगेगा, बस आना पड़ेगा। हम रुक जाएंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। perfect. Let them stay till Tuesday. Check with Peptas 5 days. Then remove the sutures. Tomorrow also can remove the sutures. And then we can do. She can apply mupirocin from inside. एक और ऑइंटमेंट डॉक्टर नाक के अंदर अप्लाई करके आपको देंगे। ठीक है, चलो बाय। ये आपकी बहन है। आपका कितना एज है? मेरा 19 19 हो गया। आप भी बिहार से? अभी? हाँ, बिहार से ही। अच्छा।